Let me share a beautiful teaching with you that's been going on in my mind for a few days. A lot of people who care about me warned me that there is already so much of competition among the people who talk about the Bhagavad Gita. तो फिर आपको इस स्पेस में क्यों जाना है? Well, my reason is pretty simple. क्योंकि मुझे सच जानना है. I want to know what the Gita really teaches and what it really means. And I understand that there are a lot of people who beautifully explain the verses of Bhagavad Gita by connecting it to the modern day life. But I realize something about myself that I only truly understand something when I share it with someone else. मतलब मुझे तभी समझ में आता है जब मैं दूसरों से शेयर करूं, दूसरों को बताऊं. And if I don't share it, it doesn't settle inside me. And while I was saying this, a beautiful verse of Bhagavad Gita just came into my mind. Chapter 2, verse 47. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संगोस्तव कर्मणि. अर्थात आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं. तो अगर कंपटीशन के डर से मैं कर्म करना छोड़ दूं या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं ये सोचकर मैं कर्म को बोझ बना लूं, तो मैं तो कभी कर्म कर ही नहीं पाऊंगी. इसका मतलब मेरी लाइफ का पर्पस तो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा. सो विद फुल रिस्पेक्ट फॉर कर्म योगा, आई चोज अ पाथ दैट इज लिवेबल टुडे, राइट नाउ, इन दिस वेरी मोमेंट. So I do my karma, you do yours. And that is Karma Yoga. And that in itself is the answer to every question.